Good morning. Suraj Singh speaking from Bharat, India. I'm going to talk about power of solve. And I'm first before that, I'm going to share with you certain files. मैं आपको पावर ऑफ सॉल्व के बारे में बताऊंगा और उससे पहले मैं कुछ फाइल शेयर कर दूंगा एंड दिस इज टुडे इट इज 15 दिसंबर 2023 फ्राइडे आज शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 सुबह सुबह का वक्त आई थिंक 10:35 40 जो भी है। और मैं पहले फाइल शेयर करके दिखाऊंगा आपको क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझाना। मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे दैट इज स्क्रीन शेयर एंड हियर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सर्टेन फाइल्स। दिस इज हियर एंड हियर इज there is this Solvency sketch. There is also this Solvency sketch, and here is you are saying some sketches are there, whiteboard, launch meeting frame. Some files are not coming in actually. That's the problem. I don't know how to get it. Is there? Yeah, it's coming here. Let us see how does it come here. Whether it's possible or not. Hmm. Problem. I don't know how to share with that. Yes, I'm trying to do it. Possibly I'm trying to do it. And some files are in there, whiteboard. Okay, whatever I have, I can share with you, and that's all I can say. This is here. This is here. Launch meeting room. Where are the files? Only 3 files, I think, can be shared, not more than that. And share. Well, let me show you this only first. Share. Okay. These files are being shared now. First of all, I'll show you this file. This is file, which is first one, a words file, and this is DRG, power of solve. DRG means something alokik. In Hindi, we call it alokik. Power of solve means Atma ki Shakti. And then I have here other one, and that is, you can say here, this is application file, which I call numbers data file. I'll discuss about this, and also I'll discuss about this as well. And it is, I think, maybe let me start with this better. Power of solve, Atma ki Shakti. And further, I would say, if I go at the end of this file, though it's not complete yet, I'm trying to speak to you this week. I'll come to explanation later on. What I want to say in this is power of solve. Power of solve, that is here, Atma ki Shakti. बहुत important चीज, power of solve. It's really very significant to understand about what is power of solve. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह महत्वपूर्ण है ये समझना कि आत्मा की शक्ति होती क्या है. It cannot just be taken for casually granted that it could be just either a phrase or a term. आप इसको सिर्फ इसी बात पे नहीं छोड़ सकते कि एक फ्रेज है, एक टर्म है, कुछ होता होगा, हमें क्या करना है. Explanation cannot be charted out to comply with some available provisions or formula because power of solve cannot be confined to mundane world, or one can say that this power is spread all over seas of areas of universe. हम इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं दे सकते. हम नहीं कह सकते कि हम कोई फार्मूला है या कोई ऐसा बताया हुआ है कि हम पावर ऑफ सॉल्व को समझ जाएं, शक्ति को समझ जाएं. हम इसको इस दुनिया में नहीं समझ सकते. और समझ सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब जगह है. पूरे ब्रह्मांडों में आत्मा घूमती है. ये खाली हमारी जमीन जिसको हम मंडेन वर्ल्ड कहते हैं उसी के लिए नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है. और इस बात को समझना आवश्यक है. Explanation cannot be chatted out to comply with some available provisions or formula because power of solve cannot be confined to mundane world. Or one can say that power is spread all over areas. मैं साफ साफ कह सकती हूँ कि पूरे ब्रह्मांडों में आत्मा जाती है और है. मैं जमीन पर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यहीं है और कहीं नहीं है. नो इमेजिनेशन कैन गो बियॉन्ड सच पावर ऑफ एनर्जी. हमारी कल्पना, हमारे सोचने का तरीका उससे बाहर नहीं जा सकता. उस शक्ति से जो है, when one understands this power, such powerful conception can change mindset completely. हम जब समझ जाएं
कोई समझ जाए कि शक्ति क्या है। ये शक्ति का जो ख्याल है, जो सोच है, जो नक्शा है, समझने के लिए आपके मस्तिष्क की सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। परमिटिंग पर्सन टू मूव अनलिमिटेड और मैसिवली उस व्यक्ति को आज्ञा दे सकता है, वो कहीं भी जाए, कितनी ऊंचाइयों तक जाए, कितनी सीमाओं तक जाए, पूरी तरह से जाए, विदाउट कंसिडरिंग अबाउट वेदर और नॉट मटेरियल्स वुड बी गेन्ड, बिना किसी इस सोच के, बिना किसी समझ के कि हर जगह उसको सामग्री मिलेगी, मटेरियल मिलेगा या वेल्थ मिलेगी। इसलिए इसको कहने का थोड़ा फर्क है। व्हेन वन अंडरस्टैंड्स दिस पावर्स, such powerful conception can change mindset completely, permitting person to move unlimited or massively without considering about whether or not materials would be gained. One must keep in mind that power, one must keep in mind that from mundane world, earth we call mundane world, earth is actually its earth, nothing can go with person when person departs or demobilizes from earth to unknown permanent destination, which place can be named real home for soul. आपको और ये हमको इसको मस्तिष्क में, माइंड में रखना होगा। ये जमीन जो है, ये मंडेन वर्ल्ड जो है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता। जब वो अपने असली घर वापस जाता है, जहाँ से वो आया है, वहाँ उसको मोबिलाइजेशन से डिमोबिलाइज किया जाता है। जब आए थे तो मोबिलाइज हुए थे, और जब जाना है तो डिमोबिलाइज हुए। आप डेथ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं इसको डिमोबिलाइज कह रहा हूँ कि जमीन से पोस्टिंग दूसरी होनी है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा छोड़ के। और वो एक दूसरा डेस्टिनेशन जो हम नहीं जानते, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे तो जान जाएंगे। परमानेंट डेस्टिनेशन है, स्थायी डेस्टिनेशन है, और उसको हम कह सकते हैं कि हमारा वास्तविक घर है वो आत्मा का, शरीर का नहीं। शरीर तो छोड़ के जाना होगा। वन वी हैव ओनरशिप ऑफ ट्रिलियंस और वॉट एवर सम ऑन अर्थ मंडेन वर्ल्ड, all material wealth shall have to be left here, including housing in which soul stayed for living period of soul within mundane body. हम चाहे कोई व्यक्ति ट्रिलियंस कमा ले, जोड़ ले, कुछ भी कर ले जमीन पे, वो सब वेल्थ, वो सब मटेरियल यहीं छोड़ना होगा। कोई अपने साथ नहीं ले आ सकता। और यहाँ तक कि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिसको आप शरीर कहते हैं, वो भी आपको यहीं छोड़ना होगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ना तो पड़ेगा ही। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, या कितने भी छोटे आदमी हो, या कितने भी वर्ष आप जिए। देन वाई शुड वन वरी अबाउट कलेक्शन ऑफ मंडेन वेल्थ? क्वेश्चन उठता है। फिर हम वेल्थ को इकट्ठा करने के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों चिंता करते हैं? कैन वन कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस इशू? क्या कोई इस बात पे सोचेगा, अच्छी तरह से सोचेगा, आत्मिक रूप से सोचेगा? ये प्रश्न उठता है। Then why should one worry about collection of mundane wealth? Can one contemplate on this issue? If one cannot develop energy in existing soul, if one cannot develop energy in existing soul, one can really do nothing in life, but one can live only for sake of survival. अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति को, जो है आपके पास, उसको विकास में नहीं ला सकते, विकसित नहीं कर सकते, इसलिए उसके हिसाब से आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, रियली वास्तविकता में कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ जी सकते हैं, इसलिए कि आपको जीना है, और आपका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा उतनी नहीं रखी जिसको आप जीने के लिए कह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ाया। नो वन लिव्स ऑन अर्थ जस्ट टू प्लीज अदर्स और टू प्लीज सोसाइटी और टू कंप्लीट और to compete among all other members of society. कोई भी व्यक्ति जमीन पे या मंडन वर्ल्ड में इसलिए नहीं रहता कि दूसरे, इसलिए रहता है कि दूसरों को खुश करे? नहीं, कोई नहीं रह सकता दूसरों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। ये एक ख्याल है। हम यहाँ किसी से मुकाबला करने के लिए, किसी से खुश करने के लिए नहीं रह रहे। हम किसी से नहीं चाहते, हम अपने आप के लिए रह रहे हैं। नो वन लिव्स ऑन अर्थ जस्ट टू प्लीज अदर्स और टू प्लीज सोसाइटी और compete among all others members of society. वास्तविकता क्या है? इन फैक्ट सच कंपटीशन रिमेन्स ऑलवेज ए मिथ। भ्रम में रहते हैं हम कि हम ये मुकाबला करना है। हम भ्रम में रहते हैं इस मुकाबले के लिए, बिकॉज कंपटीशन हैज गॉट नथिंग टू डू
at place of permanent residence of soul, क्योंकि मुकाबला करना, प्रतिद्वंद्विता करना, इससे कुछ नहीं होता है। हमारे उस घर में जहां हमने रहना है, जाना है, वहां इसका कोई लेना देना नहीं है, और हम अपना समय बर्बाद करके जाएंगे। Whatever one does on earth for self and relatives, whatever one does on earth for self and relatives and close one, nothing shall go with one. आप अपने लिए जमीन पे कुछ भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ भी कीजिए, अपने बहुत जो आपके साथ समीप हैं उनके लिए कुछ भी कीजिए, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। If one does for soul, if one does for soul, that one has gotten with it, that shall or for sure would go with persons। यदि आप अपनी आत्मा के लिए कुछ करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा कुछ करते हैं और आपको मिल जाता है, आपको जो आत्मा मिली है उससे आप करते हैं और आपको कुछ होता है, वो आपके साथ पक्की रूप से जाएगा। कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है आपकी आत्मा की, और वो आपके साथ जाएगा। फुल फॉर्म में जाएगा, जिप फॉर्म में जाएगा, वो एक अलग चीज है। इन फैक्ट वाइल रिमेनिंग ऑन अर्थ मंडेन वर्ल्ड, पर्सन फेल्स टू रियलाइज अबाउट व्हाट शुड बी डेस्टिनी फॉर पर्सन, whereas person is dipped by surrounding circumstances, which all conditions divert person from real facts and takes person to work only for self and mundane relations, rather than worrying about person's boss being supreme power who mobilized person's soul to earth or mundane world। अगर अगर सच्चाई क्या है, हम जब जमीन पे होते हैं, मंडन वर्ल्ड में होते हैं, हम ये भूल जाते हैं समझना या सोचना या करना कि हमारी डेस्टिनी क्या है, उस व्यक्ति की डेस्टिनी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और हम डूब जाते हैं ऐसे वातावरण में, ऐसी हमारे चारों तरफ घेरे में जो सर्कमस्टेंसेस है, उस समय हम उसमें घूम जाते हैं, डूब जाते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा हम हाँ, जो हमारे साथ कंडीशंस है, हमें हमें उस तरफ से दूर ले जाती हैं जो हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, जो हमारी दिशा होनी चाहिए। वास्तविकता से दूर हो जाते हैं हम अपनी, और हम दुनिया में चले जाते हैं, और हम बस काम करते हैं और जीते हैं, और यही हमारा रिलेशन है कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे वो रिश्तेदार, हम हैं, हम यहाँ ये करना है। हम ये नहीं सोचते, सोचना क्या चाहिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारा कौन बॉस है, हमारा कौन सीनियर है, इंचार्ज है, वो सुप्रीम पावर जो हम समझ नहीं पाते, जिसने हमें यहाँ मोबिलाइज करके भेजा है। जाइए, जमीन पे जाइए, इस मंडेन वर्ल्ड में जाइए और अपना काम करके आइए, वो बात हम भूल जाते हैं। पर्सन्स चार्टर इज लॉस्ट, सिंपली सी बात है, पर्सन्स चार्टर इज लॉस्ट समवेयर। व्यक्ति का वो अधिकार पत्र जो उसको दिया गया, जिसको चार्टर कहते हैं हम इंग्लिश में, उस व्यक्ति का अधिकार पत्र जो उसको दिया गया उस सुपर पावर के द्वारा, वो कहीं खो गया। विच वॉज नोन टू पर्सन, उस व्यक्ति को वो मालूम था, उस आत्मा को वो मालूम था, प्रायर टू एंटरिंग और बीइंग मोबिलाइज्ड इनटू मंडेन वर्ल्ड। उस व्यक्ति को वो सब मालूम था कि उसके अधिकार क्या थे, उसका क्रम क्या था। जब वो मोबिलाइज हुआ उस घर से इस जमीन पे, उसको मालूम था। बट पर्सन नेवर ट्राइज इवन टू रिकॉल दैट फॉरगॉटन जॉब डिस्क्रिप्शन, पर वो व्यक्ति कभी कोशिश नहीं करता उसको याद करने की कि उसको कहाँ क्या गया था काम के लिए, या उसकी आवश्यकता जो यहाँ आई, उसकी आत्मा की डेप्यूटी किया गया, उसको अर्थ पे यहाँ भेजा गया, किस लिए भेजा गया। जब हम आते हैं तो हमारे साथ लिखा जाता है, आपको जाकर ये काम करना है, ये आपके अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है, और ये आपके प्रिविलेजेस हैं। और हम यहाँ आके वो सब ध्यान नहीं करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं इस दुनिया के अंदर की रंगीनियों में, और हम वो सब भूल जाते हैं दिमाग से। लेकिन ये हमारा नुकसान है, भूलना नहीं चाहिए। याद करेंगे तो याद आएगा, नहीं याद करेंगे तो याद नहीं आएगा। पावर ऑफ soul can be understood by person who thinks a lot sincerely and applies those thoughts. What is thought of, whether contemplation may be right or it may not be right, which state would be responded by result of work application। पावर ऑफ सॉल, आत्मा की शक्ति को समझा जाता है पर्सन द्वारा, व्यक्ति द्वारा, जो बहुत सोचता है, काम करता है अच्छी तरह से, मन से, तन से, और अपने विचारों को अप्लाई करता है, और ख्याल में रखता है हर चीज को, सही को और गलत क्या है उसको समझता है। वेदर कॉन्टेम्पलेशन में बी राइट और इट मे नॉट बी राइट,
which state would be responded to result of work, जो कर्म करने के बाद, काम करने के बाद परिणाम आएंगे उसकी एप्लीकेशंस के, उसको समझेगा. But work, even if goes wrong or say incorrect, it shall act as a teacher for person, or it can be called lessons learned from errors or mistakes. अगर वो गलती भी करेगा काम करते करते, लेकिन सच्चाई रखकर, बेईमानी ना रखकर, अपने भगवान के लिए करेगा, अपने खुद उस पावर के लिए करेगा, तो वो गलती भी उसको एक अध्यापक की तरह काम करेगी. और आगे वो सीखेगा कि मुझे ये गलती नहीं कर रही है, ऐसे मिस्टेक, ऐसा काम करने से मिस्टेक हो गई, तो लेसन्स लर्न का काम बनता है वहां पे. इट इज ट्रू दैट soul कैन नॉट बी सीन एंड कैन also not be checked for its content potential or working or energy that can be applied. ये सच है कि हम आत्मा को नहीं देख सकते, हम इसको चेक नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या शक्ति है, इसके अंदर कौन सी शक्ति है काम करने की, एनर्जी कौन सी है, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कार्यमत कर सकते हैं. सॉल इज समथिंग एक्स मंडेन. सॉल इस जमीन से बाहर की चीज है. जमीन का मतलब मंडेन. सॉल इज समथिंग एक्स मंडेन बट एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली एंड इंक्लूसिवली बोथ. ये जमीन से बाहर की चीज है, लेकिन हम इसका काम कर सकते हैं जमीन के अंदर भी और जमीन के बाहर भी. Soul is something ex-mundane but applicable exclusively and inclusively both. Soul has no definite capacity in a person's mind. Soul has no defined capacity in a person's mind, and thereby within all other parts of body, it can be recalled and received as and when required, without encountering any problem and also without making any payment to vendor, supreme power you can say of this commodity. साउल के अंदर कुछ भी परिभाषित नहीं किया गया कि पर्सन की शक्ति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और उसके बाकी जो पार्ट्स हैं शरीर के उसमें क्या है. लेकिन याद किया जा सकता है कि हमने क्या रिसीव किया, इसको वापस बुलाया समझा जा सकता है जब भी आवश्यकता हो, और हमें इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमें इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी, कोई भी भुगतान नहीं करना उस वेंडर को जो सुप्रीम पावर है इस दुनिया का, इस कमोडिटी का, जिसको मैं साउल कह रहा हूँ. मजाक में नहीं लीजिए, ये वास्तविकता है. But person while staying on journey within mundane planet or earth cannot understand easily included value within soul and its structure. लेकिन जब व्यक्ति जमीन पे होता है, मंडेन वर्ल्ड की यात्रा पे होता है, इस जमीन की यात्रा पे होता है, इस प्लेनेट की यात्रा पे होता है, वो समझ नहीं सकता, समझता नहीं है, समझ नहीं सकता कि उसके अंदर कौन सी शक्ति है और उसका ढांचा क्या है. Nature is always very kind. Nature is always very kind and courteous with every creature which is designed and manufactured or produced in unlimited numbers. प्रकृति बहुत अच्छी है, बहुत दयालु है, अपने को जगह देती है दूसरे को, उसको एंटरटेन करती है, हर हर व्यक्ति को, हर क्रिएचर को, व्यक्ति ही नहीं, और जिस जो क्रिएचर, जो व्यक्ति इसने डिजाइन किया है, बनाया है, भेजा है, उसको अनलिमिटेड नंबर्स में भेजा है. उसको सब कुछ वो बताती है, देती है, सब कुछ समझती है. नेचर मीन्स हेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड नॉट जस्ट फिजिकल नेचर. हम जो कह रहे हैं यहाँ, हम फिजिकल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हर तरह का नेचर, आत्मा भी नेचर का हिस्सा है. नेचर मीन्स हेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड नॉट जस्ट फिजिकल नेचर बाय ऑल एंटिटीज ऑफ गॉड डिजाइंड एंड बल्ट नेचर. पक्षी, जानवर, समुद्री लोग, सब कुछ में नेचर आता है. पर्सन इटसेल्फ इज एन entity produced by nature, which must realize fact that every person is really, in reality, is a machine operated by immense power of soul. व्यक्ति अपने आप में एक यूनिट है, एक मशीन है, एक प्लांट है, जिसको प्रकृति ने बनाया है. और उस प्लांट को रियल वास्तविकता में सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है. वास्तविकता ये है, हम एक मशीन है जिसको हमारी शक्ति आत्मा की ऑपरेट कर रही है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पर्सन और कंसिडरिंग पर्सन और कंसिडरिंग जस्ट ह्यूमन पर्सन, who is nothing less than a plant in its turnkey position without applying any further work on this, accepting, maintaining its capacity
by food and water fuel at defined or at necessary variable frequency. कोई भी व्यक्ति होता है, ह्यूमन हम कहते हैं मानव है, वो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, एक मशीन है, एक प्लांट है, एक ऐसा प्लांट जिसको कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दीजिए, और हमें इस पे और कुछ काम नहीं करना होता है, इसको खाली मेंटेन करना होता है, इसका देख रेख करना होता है, इसके लिए हमें खाना होता है, पानी पीना होता है, ताकि ये अपने हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी में चले, और इसकी जो सप्लाई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आत्मा की एनर्जी, वो समाप्त ना हो, उससे नुकसान ना करे. एवरी पर्सन हैज बीन मोबिलाइज्ड ऑन अर्थ, a mundane planet, by superpower, not because person entity just stay on Earth and then they mobilize just for sake of staying. Every person has been mobilized to Earth, mundane planet, by superpower, not because person entity just stay on Earth and then mobilize just for sake of staying. व्यक्ति को जो भेजती है सुपर पावर, जाइए जमीन पे, क्या आप समझते हैं इसलिए भेजती है कि जाइए खाइए पिए और वापस आ जाइए रह के वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है. उसको यहाँ किसी ना किसी काम के लिए भेजा जाता है, और खाली यहाँ रहने के लिए और सोने के लिए नहीं. पर्सन शुड बी कंसिडर्ड गिवन एन एम्प्लॉयमेंट बाय सुपर पावर टू वर्क ऑन सम डिस्क्रिप्शन दैट मस्ट हैव बीन अलाउड फॉर इनकम्बेंट इंडिविजुअल सर्टेन. हर आदमी जो आता है, उसको एक तरह से आप कह लीजिए एक नौकरशाही बन के आता है, नौकरी करने आता है, एम्प्लॉय बन के आता है, मुलाजिम बन के आता है. उस शक्ति द्वारा जो उसने यहाँ भेजा है, जाइए आप ये काम कीजिए, ये हम आपको काम दे रहे हैं, और इंडी इसको हमें अलॉटमेंट दी है काम की, उसको पूरा करके आइए, और इस दुनिया को जो हमने बनाई है उसको सुंदर और सा बना के आइए, चाहे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अब दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना रहे. Person should be considered given an employment by superpower to work on some description that must have been allotted for incumbent individual. Certain work must have been allotted for helping world improve in short and long term. Certain work must have been allotted for helping world improve in short and long term. कुछ ना कुछ काम दिया जाता है उस व्यक्ति को जो आता है कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में या क्या लघु समय में, इस काम को पूरा करके आइए. इफ देयर रिमेन्स नो वर्क फॉर समवन, दिस मीन्स डिप्लॉयमेंट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हैज गिवन नो मीनिंग. अगर आपको काम नहीं मिला तो इसका मतलब किस लिए आप यहाँ हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. It is true that superpower does not send anyone without defining any destination. ये सत्य है कि वो शक्ति, ऊपर वाली शक्ति, किसी को भी बिना किसी काम के किसी मंजिल पे नहीं भेजती. तो इट इज अंडरस्टूड दैट डेस्टिनेशन इज टू बी अचीव्ड बाय इंडिविजुअल. ये समझा जाता है कि वो मंजिल व्यक्ति को, और व्यक्ति या जो भी है, उसको प्राप्त करनी है. This, though this is understood, it's understood that destination is to be achieved by individual, but I do not accept this concept because there is nothing for any individual on this planet, even body house in which person lives does not belong to person primarily, whereas its use for person remains significant for whole life or Earth's stay in good living conditions. मैं इस बात को भी नहीं मानता कि आदमी सिर्फ जो कहा गया वही करे. I do not accept this concept because there's nothing for an individual on this planet. किसी भी व्यक्ति के लिए इस जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है. ये हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा हो, लेकिन सब उसका है. इस बात को हमें समझना होगा, हमें काम करना होगा, हम नहीं भाग सकते. So it's understood that destination is to be achieved by individual, but I do not accept this concept because there is nothing for an individual on this planet, even body house. आपका कुछ नहीं, लेकिन करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है. ऑनरशिप नहीं है आपकी. Where its use for person remains significant for whole life or stay in good living condition. आपको यूज करना है, आपको ऑनरशिप मिल, पहले आप कागज में ऑनर हैं यहाँ जमीन के हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से कोई भी यहाँ ऑनर नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है. No one can stay on Earth, mundane planet, without having designed and delivered on Earth biological planet known as living body. आप इस शरीर में जो बायोलॉजिकल है, इस प्लैनेट में नहीं रह सकते. No one can stay on Earth, mundane planet, without having designed and delivered on Earth biological planet. अगर ये शरीर नहीं होता तो हम यहाँ रह भी नहीं सकते थे. कहने का मतलब ये, which for sure cannot be taken back to other world.
और ये शरीर को हम वापस उस दुनिया में भी नहीं ले जा सकते, ये भी सच है। बट इट इज ऑलवेज डिस्पोज ऑफ बाई वट एवर मैथड, और हमेशा इसको किसी भी तरीके से इसको डिस्पोज किया जाता है, समाप्त किया जाता है। एवरी पर्सन इज फ्री टू वर्क on this planet and to add power to existing minimum potential of soul, which is certainly required essentially for sake of living at least. हर व्यक्ति को इस जमीन पे, इस प्लेनेट पे भेजा जाता है, कहा जाता है काम कीजिए, जितने भी शक्ति आपकी आत्मा की, उससे काम कीजिए, और वो काम की शक्ति आपको दी जाती है। अगर आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो दी जाएगी, क्योंकि आपको काम करना है, वो शक्ति मिलेगी। Every person is free to work on this planet and to add power to existing minimum potential of soul, which is certainly required essentially for sake of living at least. But superpower never ever stops or prevents anyone from conducting process of augmentation of this power of soul. जब आपको जरूरत है, इसकी शक्ति को बढ़ाया जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, वो भी नहीं रोकेगा जिसने आपको भेजा है, बल्कि वो खुश होगा। दिस पावर इज so strong. This power is so strong and efficient in its functioning that no obstacle can come on its way. But its performance takes its power strength further intensified. ये शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, इतनी काम करने वाली है कि इसकी काम करने के तरीके को कोई भी रुकावट नहीं आ सकती इसके रास्ते में, और इसको काम करते रहना है, परफॉर्मेंस देती रहना है, शक्ति बढ़ेगी और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। Person has got many numbers of parts in this body. हाउसिंग, हमारे जो हाउसिंग है, शरीर, इसमें हर व्यक्ति के बहुत सारे अंग हैं। These parts have related significance to mind room. These parts, these parts have related significance to mind room. Mind is a room in our body, very significant control room, you can say. This is central room, control room, you can say central control building within this plant. So mind room, while every part has been designed for direct as well as indirect functioning with mind. ये बाकी जितने भी पार्ट हैं, बॉडी के हिस्से हैं बॉडी के, उनको लिंक किया गया है, डिजाइन इस तरह किया गया है, उनको इनडायरेक्ट फंक्शनिंग माइंड से वो लेते हैं। दीज पार्ट्स हैव रिलेटेड सिग्निफिकेंस टू माइंड रूम while every part has been designed for direct as well as indirect functioning with mind. बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। हमारी शरीर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा रिफाइनरी कह लीजिए, एक सब प्लांट कह लीजिए, प्रोसेस करता है। बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट फील्ड विच कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली अंडरस्टूड कॉम्प्रहेंसिवली इन डिटेल्स। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको हम बिल्कुल साफ तरीके से समझ नहीं सकते, समझ नहीं आएगा। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट फील्ड विच कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली अंडरस्टूड comprehensively in details. Whole plant has been wrapped carefully into complete functioning mode in such a coordinated way that there can be possibility of at no moment that all parts do not work, or could be either one doesn't work. Each part has obtained its own significance to whatever role or job it has to perform along with whole plant throughout entire span of body वर्किंग इन फॉर्म ऑफ प्लांट। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सब एक्सपर्ट हैं इसमें, जितने मेंबर्स हैं इसके बॉडी के, एंड इसको इस तरह से मोड, इस तरह से फोल्ड किया गया है, रैप किया गया है कि आप इसको कंप्लीट फंक्शनिंग पाएंगे, एक अच्छे समन्वय से पाएंगे, कोऑर्डिनेशन से पाएंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगा, और हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है उस पर, और उस पर काम करना ही पड़ेगा, काम करता रहेगा। और इसलिए इसकी हर पार्ट समझना होगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते ये पार्ट इंपॉर्टेंट और ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। पर्सन मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ सच ए ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग continuously performing durable and reliable machine. Person must take advantage of such a beautiful, strong, continuously performing durable and reliable machine or equipment which no profession in mundane life can provide with. During entire lifespan, person does not understand value of such equipment because one has gotten something without any effort. That something is not considered valuable by person, but when it does not exist, और व्यक्ति इसका एडवांटेज नहीं लेता, इस सुंदर शरीर का, इस परफॉर्मिंग अच्छी तरह से काम करने वाली
जो बहुत लंबे तक काम करती है। इस मशीन का, इस प्लांट का हर एक को समझ नहीं आता है। पूरी जिंदगी ये चलती है लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज सभी समझ आता है जब वो समाप्त हो जाता है। Unfortunately, unfortunately and unknowingly, person remains in false world, गलत फहमी की दुनिया में, भ्रम की दुनिया में। Unfortunately and unknowingly, person remains in false world that some power would come to him or her by itself and bring good fruit to person automatically. For superpowers wish, person forgets that superpower does not believe in self success without making any effort. Even that superpower is required to work for reaching whatever achievement on what basis, then person believes that by virtue of itself and by luck success would be achieved. Power of soul is factual energy that can motivate person to start, move, and keep rapidly running on way, leading to set goals. If one does as such, there remains no other way to achieve success or during movement on way. Many more ways shall be discovered by application of interest and use of mind. As it has been said earlier, that no size or dimension can be worked out or measurement taken from power of soul, which should which soul remains in one time in its own adopted units. Because performance by person based on quantum of power of soul energy, whatever in quantity is necessary to be taken off, person shall be successful in extracting that quantity from mind store or chamber. Fluctuations may occur in current use of power of soul depending upon requirement, but necessary quantity wouldn't always be available if person so requires. I'm just reading fast because I don't have much time, so 40 minutes that can be allowed as or maybe all in many minutes. Is stressed. It is stressed again that there exists no such upper limit which person may use, may may or I'm sorry, it's stressed again that there exists no such upper limit which person may not use beyond. ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसके बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपके लिए पूरा फ्रीडम है। आप जाइए, ताकत लगाइए, आगे जाइए, जो मांगेंगे वही मिलेगा आत्मा की शक्ति को। Reference cannot be given to just size of head or tolerance or no tolerance by person, but person's mind got no limits. It may be massively at times and normal at certain times, depending upon capacity of thinking, multiple thinking, communications, coordination, and whatever else essential requirement. Person would get demanded quantity as and when required. If someone cannot try, may try without without any obstruction, provided some goal has been set. To be very frank, this is an energy funding done by universe for each and every person, provided person uses it, but hardly 1% may use it if required. I told 1% on higher counts, while it could be much lower. Soul can be so powerful at times that it may help other individuals by extending assistance to those who require such assistance for whatever acts to be done by support of soul power donator. There can be no defined limits, there can be no defined units in that regard, but just continuous help. Just imagine about Just imagine about when you got immense power of soul and start feeling energetic all times and continue enjoying such energies. It shall certainly give person extreme pleasure, power of organization and controls over all affairs at whatever location in mundane world. But problems arise. Problems arises when persons
use person uses such energies for destructive purpose, because for such purposes also power of soul can be used without any kind of incoming constraint from nature. Yes, destruction is a part of nature, but not by individuals or by those who are travelers on earth. Production of nuclear bombs and killing weapons Production of nuclear bombs and killing weapons do require such powers, but supreme power shall never be pleased with such bad use. Persons shall have to respond to all such bad acts. Supreme power shall certainly act against such soul for extreme stern actions, because destruction of nature and humanity are not accepted by supreme power. Results and punishment may be awarded, say suspension of soul out of universe for many hundred years, or such other harsh action to punish. One should not forget that person cannot take any particle of whatever thing to permanent home. Only soul has no, only soul has to go back. It's essential that person who has obtained power of soul per requirement must respect it for optimum use, so that nature does not feel disappointed, because nature has permanently provided mind to everyone, and mind to only physical power that should person would use. If one abuses this power of soul, one must be ready to face all consequences. This is only small writing which I'm continuing, but just for information I wanted to share with you. And then I have here this file. This is called number file, and also I have this file here. And this file is very important one. And this is a file that gives you something about generation model generation model. And this file is about something that gives about explanation of inundator, that is power of soul, that is inundator it will give you about. And also this file would give you how a person lives in, and that is really important one. Solar systems are connected together, and also here you can say solar system given here, how a person is linked to solar system. I'm sorry if you cannot see this page, then I check it back. I hope you may look into this. And also we can say, I'm trying to show you how it works, how person is linked to earth. And that's an important point, because I could not check all pages, but let me see, it is a work or not, I don't know. Let's see. Now I'll come back to Excel file. This is a very important one. And that is here, this file is an application developed. It was started to be developed in, you can say, about 30-40 years back. But this is an application of Excel that has started with loads 1 to 3. In this file, I'm using application of numbers. You can say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These numbers in relation to Sol, and not relation to astrology, or no relation to numerology at all, just is linked to mind, and you can say Sol, power of soul, and how soul functions in body, what's its location, what's formula, and how our body parts are numbered. According to my own conception, there's no book as such. Somebody wrote, and I took from that note at all. This you can say something initiation of this work, and this I'm calling spiritual power, or power of science, power of soul, and also applied spiritual numbers, which I say applied spiritual numbers here in this file, which you have seen, as I said here. If you see here in this file, which I showed you before, this power of soul and this power of soul, and if you see its origin here, I start here, dear G power of soul, आत्मिक शक्ति आप कह सकते हैं, applied spiritual numbers 0 to 9, and time indication. I'm not saying luck, I'm saying time. Previously I used title luck, but I think that people don't understand. If you talk of luck, they will say, okay, tell me my luck. What is my number? How does it work? Tell me my start. I'm not going in that direction. I am not saying you believe in luck. I'm saying my luck is my work. How I conduct my life, how do I work, how much hard work can I do? That is my luck.
If I'm successful in working, that's my luck. I don't say I got success or not, but if I am successful in working, that's I'm saying. I'm not saying work is successful. I'm saying मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं काम करने में सफल हो रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैसा आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट इज डिफरेंट इशू। बट काम होना, अपने आप में एक शक्ति होना, काम करना ही एक सक्सेस है। जिस तरह हम कहते हैं जीरो से एक पे जाना, क्रम चेंज करना। आप जीरो से एक पे आते हैं, एक से दो पे आते हैं, दो से तीन, या आगे चलते जाते हैं, तो ये भी एक सक्सेस है। आप दूसरी जगह आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अंतिम सक्सेस तो मृत्यु है और कुछ नहीं है। लास्ट सक्सेस इज लिविंग दिस अर्थ, और यू कैन से डिमोबाइलाइजेशन फ्रॉम अर्थ। अंकों का आत्मा से रिश्ता या संचार, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और ये कुछ दूसरी बातें, पावर ऑफ सॉल, आत्मा की शक्ति, अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर 0 to 9 एंड टाइम इंडिकेशन, अंकों की आत्मा से रिश्ता, ये डायग्राम शक्ति का। और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुए, मैं बताऊंगा। मेरे पहले कुछ पेज तो हैं आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि जो लोग बताते हैं उस भ्रम को दूर करने के बारे में, कि हमारे हाथ क्या कहते हैं, हमारा माइंड क्या कहता है, उसको समझने के लिए। मैं भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहता, मैं साफ बता देता हूँ। और ये जो चल रही है फाइल, आपको डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आई विल गेट यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ग्रेजुअली, आई कैन नॉट जस्ट मूव इन 40 minutes। एंड आत्मिक संसार माइंड के बारे में, रेखाओं के बारे में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है और क्या हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये हाथ, ये माइंड इज लिंक टू दीज palms एंड हैंड्स, एंड ये लाइंस आर दे, you have to understand. You have to understand brain's right hemisphere, brain's left hemisphere, spiritual world, reference, ज्ञान की सच्चाई, knowledge of truth. We can say something's written here. History of man, creativity is filled with series of arts. History of man, its history of man's creativity is filled with series of artists and scientists who, after working hard and long on some difficult problems, consciously decide to forget it, to affect, turn it over to their unconscious right hemisphere. After sometimes, often with great suddenness and totality, unexpectedly, solution to a problem announce itself to them in almost complete form. Right hemisphere appears to have been able to overcome most difficult logical and systematic problems by vivid conjuncture, relaxing rigid standards of thought of left hemisphere. Given loose standards, right hemisphere employs, it was perhaps able to design thought experiments which left hemisphere could not because of rigidity conceived right. Hemisphere hemisphere is thus able to hit upon solutions which could then, of course, recast into strictly logical terms by left hemisphere. This is a quote from IIT Technorama, and date was 4/5/92. And Professor Sijar was author of this. He has taken this reference from somewhere. However, I just reflected to you कि आपके माइंड में, आपको जब अनकॉन्शियस होंगे, जब सो रहे होंगे, आप कह सकते हैं सपना देख रहे होंगे, जो भी आप वास्तविकता में जीवन की प्रॉब्लम्स है, वो वहाँ डिपिंग मोड में आ जाएंगी और आपका साथ देंगी। आपकी समस्याएं जो रही होंगी वो वहां पर, जो नहीं आप सॉल्व कर पाए, तो वो वहां पर आपको आंसर मिलेंगे। और वही एक बहुत बड़ी चीज है शक्ति की। ये बताती है कि शक्ति काम करती। विचारों की दुनिया क्या होती है, हम आपसे बात करेंगे। ओपिनियंस क्या होते हैं, क्योंकि अब ये बंद होने वाला है मेरा 40 मिनट के आसपास। हमारे अंदर बाहर तरंगों के थैले लिफाफे, इसके बारे में बात करेंगे। आत्मिक शक्ति क्या है, कॉन्टेम्परेरी सजेशंस। और ये बहुत लंबी फाइल है। वास्तविक दुनिया, जीरो क्या होता है, ऐसा डायग्राम, ये जीरो का डायग्राम है, ये आपसे बात करेंगे हम। और शून्य सौर मंडल घेरा, एकांतरीकरण, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और नंबर्स क्या हैं, ये बात करेंगे। ये नंबर्स की बातें 1 2 3 से जीरो तक, और ये कहाँ कहाँ पर क्या है। एंट्री ऑफ सॉल इनटू बॉडी, और आत्मा की चाल शरीर में। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये लक की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। टॉप प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मेटरिज्म क्या होता है, और ये सब बातें की जाएंगी। ये फाइल दिखाऊंगा मैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आत्मा को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा,
लेकिन हमने कैलकुलेशंस की हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये मैं आपके साथ फिर वही शुरू में पहुंच जाता हूँ, और ये आपके साथ एंड में ही पहुंच जाता हूँ। एंड में जो मैंने आपको दिखाया, पावर ऑफ सॉल्व, हम आगे और बढ़ा रहे हैं, लिखेंगे इसको, बात करेंगे। और फिर वही ये फाइल, ये वाली फाइल, ये ऑटोमेटिक चलती है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये लिखा है 30, हम यहाँ लिख देते हैं आज 15, 15, 15, 15, 12 और 55 लेटर से ये फाइल हो गई। देखिए नंबर चेंज हो गया और सारा चेंज हो गया, सारा चेंज हो गया यहाँ पर। और ये मैंने तीन बनाए हैं ऐसे, ये दिस इज फॉर वन पर्सन, अदर पर्सन, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, या फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू कैन सी दिस रिलेशंस आर सीन देयर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। And I'll be back here next time because now time is less than 40 minutes. And let me go see how it's working now. And how it's working, let me see how does it work. And I don't know how it's. Let me see now. Stop share. I stop share, and so I'll go back see what we do. I come back here now. Now I'll try to let me close this file first of all. Close window, and मैंने जो भी डिस्कस किया आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो भी डिस्कस किया, और उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो समझना होगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी बात हम कर रहे हैं वो खाली पीली नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सी बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। वो समझनी होंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। हाउएवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक टाइम इज गेटिंग अराउंड, एंड maybe I'm getting late because free time is 40 minutes. 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। लेट मी क्लोज इट नाउ, एंड let me say and let me end it.